Hello, children. So I hope in your board exams you are doing well, and same way I expect at least in my subject, in your own subject geography, you have to perform very well. Okay, and you should try to score 100 out of 100. That is 80 out of 80 in the board exam. Okay, because 20 is for your project assignment, right? Acha, now let's discuss without wasting any time. Let's start with a quick revision of the chapters. Especially here, I have got a practice paper again. And in this practice paper, I have got actually the MCQs from the climate chapter and from soil resources. Okay. And just a few basic questions from the topo sheets also. Right. So let's have a quick uh, revision of this, right? Fine. The first question, if it comes, children, as we had discussed in the earlier practice papers also, अगर आपको याद होगा, मैंने ये चीज बहुत क्लियरली आपको बताया था, and it should be there always in your mind, you know. एक ग्रिड स्क्वायर, हमारा जो टोपो शीट होता है, बड़ा टोपो शीट जो एग्जाम में आएगा, उसमें एक ग्रिड स्क्वायर जो होता है, उसका एरिया, एक ग्रिड स्क्वायर, ये एक ग्रिड स्क्वायर होता है, ठीक है? इसका एरिया जो होता है दैट इज ऑलवेज 1 स्क्वायर किलोमीटर. रीजन बीइंग, one side of one grid square is 1 kilometer and the other side is 1 kilometer. That means it's a perfect square, right? So if we take out the area of this, naturally it is going to be 1 square kilometer. Understood now? तो अब इसमें बच्चों अगर ये क्वेश्चन आता है कि इस पूरे एरिया का, जो यहाँ पर आपको 9 स्क्वायर्स दिख रहे हैं, राइट, इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, और उसमें वो 9 या 10 स्क्वायर्स मेंशन नहीं करते हैं. उसमें आपको ऐसे आएगा कि फ्रॉम द ईस्टिंग, ईस्टिंग आपको ये पता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ईस्टिंग्स आर द वर्टिकल लाइंस, ठीक है? ईस्टिंग 92 से 95, राइट? 92 means you can see the cursor here, 92 easting ये है, फिर 93, 94, 95. ओके, मतलब इसके बीच में कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं हमारे? 1, 2, 3. ओके, from 92 to 95, 3 eastings are there. Same way from northing 26 to 29, that means 26 to 27, 27 to 28, 28 to 29, 3 squares are there in this way also. So if we count 3 into 3 means 9. Okay, so in total we are getting how many squares? 9 squares. अगर क्वेश्चन ये आता है कि what is the area from this easting to this easting and this northing to this northing, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको वो स्क्वायर्स काउंट करने हैं, ठीक है? वो सारे ग्रिड स्क्वायर्स आपको काउंट करने कि कितना उसके अंदर आ रहा है जो मेंशन्ड है क्वेश्चन में, एंड देन यू जस्ट हैव टू मेंशन द सेम वे, like 1 grid square is equals to 1 square kilometer. So naturally 9 grid squares equals to 9 square kilometer. Done. Okay, so this is how you have to mention. I have just given you one example of this here, right? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, द एरिया एनक्लोज्ड हियर इज, इसका एरिया कितना होगा? तो 9 स्क्वायर्स हैं, 9 ग्रिड स्क्वायर्स है ना, so that means it's 9 square kilometer. So B is the correct answer. Okay, now come to the next question, question number 2. Question number 2 is identify the drainage pattern seen in 9327, right? Now 9327, अब इसमें आपको नंबर चेक करना होगा ग्रिड स्क्वायर का, राइट? 9327, 9327 ग्रिड स्क्वायर कौन सा है? अब आप ये देखिए, 93 इज द सेकेंड वन एंड 27 इज दिस वन, सेकेंड फ्रॉम बिलो, राइट? तो अब 9327 का ग्रिड स्क्वायर कौन सा होगा? इधर वाला होगा कि इधर वाला होगा? इसके लिए भी मैंने ये आपको ये तरीका बताया था कि हमेशा ये चीज ध्यान रखना बच्चों की, आपको एल अल्फाबेट लेना है, एल, राइट? कैपिटल एल, कैपिटल एल हमेशा आप कैसे लिखते हो? द स्ट्रेट वे, राइट? वन स्ट्रेट लाइन एंड राइट साइड. ओके, सो एल जब आपने लिया, ये 93 वाला, ये एल वाला पार्ट जो है ये लाइन होगी, ठीक है? और 27 का ये लाइन होगा. क्लियर?
on the right side of 93. तो ये वाला स्क्वायर हम चेक करेंगे, नॉट द अदर वन, द अर्लियर वन, नहीं, ये एल जिस तरफ बन रहा है वो वाला स्क्वायर हमें देखना है। अब इस स्क्वायर में 9327 स्क्वायर में कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बन रहा है, अब ये आपको चेक करना है। और ड्रेनेज पैटर्न भी हमने ये चीजें डिस्कस की हुई हैं पहले। ड्रेनेज पैटर्न्स में देखो आप, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न इज दैट जहां पर आप ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखोगे, ट्री लाइक आप बोल सकते हो, लाइक ब्रांचेस हैं, या द अदर वे यू कैन से लाइक जैसे रूट्स होते हैं, ओके। या एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद हो, डेंड्रॉन्स, which is very similar to the word dendritic, okay, dendron, neuron, I told you that time कि आपने शायद बायो में ये चीज पढ़ा होगा, राइट, नर्वस सिस्टम में। तो जस्ट लाइक दैट डेंड्रॉन्स का अगर शेप आप ध्यान करो तो इट्स जस्ट लाइक दैट शेप ओनली, ओके। तो ये डेंड्राइटिक शेप यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, एग्जैक्टली दिस इज द डेंड्राइटिक शेप, ओके। दिस इज वन टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। इसी एक पिक्चर में आपको तीनों ड्रेनेज पैटर्न्स मिल जाएंगे, राइट। सेकेंड ड्रेनेज पैटर्न होता है रेडियल। रेडियल मीन्स फ्रॉम, इट इज इमेजिन कि फ्रॉम अ हिल टॉप the streams, several small streams are rising from there, okay, and they are moving in different directions. आप उसका बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ देख भी सकते हो 9427 में, 9427 ये नेक्स्ट जो स्क्वायर है, okay, it is somewhat like it is from a center of radius, center of circle, different radii are going in different directions, okay. तो it's just like that, मतलब आप अगर ये चीज आप देखोगे, इट्स क्वाइट सिमिलर टू द रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ओके। इसी वजह से इसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। और एक और होता है ट्रिलाइज्ड आपको एक और स्क्वायर में यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज 9428, ओके। 9428 में आपको ट्रिलाइज्ड पैटर्न मिलेगा। ट्रिलाइज्ड आप देख सकते हो, बहुत क्लियर यहाँ पर दिया हुआ है, दो स्ट्रीम्स हैं और इनकी ट्रिब्यूटरीज आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट दे आर फॉर्मिंग अ पैरेलल पैटर्न, राइट। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिलाइज्ड, क्लियर। ये मेन ड्रेनेज पैटर्न्स आपको पढ़ने हैं बच्चों इसमें टोपोशीट में, क्लियर। अच्छा, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द यूज ऑफ फायर लाइन। अब फायर लाइन कहाँ है, आप ये देख सकते हो नीचे यहाँ पर फायर लाइन बना हुआ है। अच्छा, फायर लाइन का बेसिकली यूज क्या है, फायर लाइन है क्या। Fire line is a 5-meter broad, you can say, path or a passage which is left in between forested areas, right? Suppose the main, the one forested area is on one side. It is separated from the other part of the forested area with the help of one broad, you can say, passage which is left in between, right? And that is actually called the fire line. What is the purpose of it? Purpose is mainly, by the name only you must have got some idea, to stop fire within that limit, okay, not to allow fire to spread away, actually you can say to cross that fire line to the other part of the forest, okay. तो अब ये फायर लाइन जो है ये स्पेशली बच्चों वहां पर मिलता है जहां पर डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, राइट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में फायर लाइंस रेयरली आपको मिलेगा, कहीं बाई चांस, राइट। बाई चांस अगर कहीं अगर मिला तो मिला, वैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं होता है। रीजन ये होता है कि वहां पर कभी भी जो लीव्स हैं एक साथ में, the trees are not shedding their leaves at the same time, okay. But in the case of deciduous forests are seen in those areas where the rainfall is actually seasonal, okay. तो यहाँ पर फायर लाइन भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है सीजनल रेनफॉल को, okay, not directly, yes, but it is indicating because fire line is found in deciduous type of forested area, right, especially. And here you can see the forested areas, their green color means forested area, right. तो यहाँ पर इसका पर्पस क्या है, to keep the fire, by chance if any such incident happens, always to keep fire on one part of it only, right, to stop the spread of fire. This is the purpose. अब यहाँ पर आप देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर वर्क करेगा, B is the correct option for this, right. Now come to next one. Next question is
What's the main occupation seen here? Main occupation of the people can be like small dots, blue dots are there ना, तो blue dots यहाँ पर हैं. फिर aqueduct है, aqueduct आप देख सकते हो, a channel by which the water is actually artificially it is provided to the entire land area. Okay, this is aqueduct. Then a seasonal river is there with us, you can say perennial flow of water channel. एक blue line आपको दिख रही है इस what seasonal stream में, right? तो ये ब्लू लाइन जो है ये कैसे इसमें मतलब कैसे हमें पता चलता है कि ये सीजनल फ्लो ऑफ वाटर चैनल इज देयर बाय दिस ब्लू लाइन ओनली, राइट? रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन फाइंड इट इज जस्ट ब्लैक डॉट्स आर देयर, दैट मींस अ सीजनल रिवर. और जब भी ब्लू लाइन इसमें से मतलब मार्क्ड है तो मतलब इसके अंदर हमेशा throughout the year there is a narrow flow of water channel is there, and that is called perennial flow of water channel, right? तो ये इसको इंडिकेट करता है. ओके, तो अगर आप एग्रीकल्चर अगर ऑक्यूपेशन आप बोलते हो तो एग्रीकल्चर को एक्चुअली सपोर्ट करने वाले कई पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे. वन इज दैट देयर इज एन embankment, right? One embankment or dam, you can say, it's there to provide water. Number two is that aqueduct is there, right? It is providing water to the entire agricultural land. एक और चीज यहाँ पर है, सीजनल स्ट्रीम तो है ही, साथ में और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that is you can find small blue dots are there which is again supporting the presence of agricultural activity in this area, which indicates what? Blue dots means perennial wells. Okay, तो ये सारे जो points हैं that indicates the occupation is agriculture. Moreover, कंटूर्स यहाँ पर बहुत कम है, एक कंटूर क्रॉस कर रहा है and that is actually that means it's a you can say plain surface area, right? Next question है east west distance on ground in this extract is. east west distance मतलब क्या हुआ? From like 65 to 62. Okay, 60 like eastern side, easternmost you can say the easting or the grid line is 65 and westernmost is 62. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इज हाउ मच? सिंपल. तो आपने ये चीज पहले बहुत क्लियर डिस्कस हम लोगों ने किया हुआ है कि दो ग्रिड लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है 1 किलोमीटर. ओके, तो अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना 62 से 65 के बीच का तो कितना हुआ? 62 से 63 1, 63 से 64 2 एंड 64 से 65 3. सिंपल, 3 किलोमीटर्स. तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देखोगे कि इसमें 3 किलोमीटर्स मेंशन है कि नहीं. यस, इट इज देयर. द सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया. देन नेक्स्ट इज क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया वुड बी. अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ भी सकते हैं एग्जाम्स में, राइट? इट्स लाइक टोपो शीट में आप एक क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट कैन बी द क्लाइमेट ऑफ दिस एंटायर एरिया. अब उसमें आपको एक चीज ध्यान देना है बच्चों कि पूरे टोपो शीट में अगर फॉरेस्ट एरिया है, राइट, तो हमेशा जो मतलब रेनफॉल है वहां पर वो कंपैरेटिवली मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होगा. व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज देयर? अगर डेसिडियस होगा तो सीजनल रेनफॉल, राइट? और उसमें भी अगर फॉरेस्टेड एरिया नहीं है दैट मींस इट इज नॉट गेटिंग मच रेनफॉल. ओके, तो ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है इस चीज पर. फॉरेस्ट अगर है दैट मींस इट इंडिकेट्स rainfall is there. It's seasonal moderate rainfall or seasonal heavy rainfall, depends on the type of vegetation, right? If open scrub area is there, like in the entire part white patches are there in the topo sheet, right? And there you'll find some dunes are there in that topo sheet. तो उसमें आपको आप क्या बोल सकते हो क्लाइमेट के बारे में? वहां पर होगा like the area is getting hot and dry type of climate with seasonal scanty rainfall. Scanty क्यों? क्योंकि वहां पर लाइक सैंड ड्यून्स आप देख सकते हो उस कंडीशन में. ओके, फिर वहां पर आपको ओपन स्क्रब अगर वहां पर है तो वो आप पॉइंट दे सकते हो, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन भी आता है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट कैन यू सी एंड गिव एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर.
तो वहां पर आपको ये पॉइंट्स देने होंगे, राइट? ओके, अब यहाँ जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, द क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया वुड बी, क्या क्लाइमेट हो सकता है आप ये बताओ? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर इज देयर, दैट मीन्स इट गेट्स अ मॉडरेट सीजनल एंड मॉडरेट रेनफॉल. Okay, so B option is the correct option for this, right? Now come to the next question. Identify the man-made feature in 2806. 2806 अब क्या है? आप देखो, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको लोकेट करना है फोर फिगर, राइट? 2806, 28 हमेशा ईस्टिंग का वैल्यू पहले होता है, ठीक है? तो 28 ये हो गया, 06 ये हो गया. तो यहाँ पर एक मैन मेड फीचर है. मैन मेड फीचर क्या होता है? लाइक यहाँ पर एक टैंक तो दिख रहा है, सीजनल टैंक है ना? सीजनल टैंक आपको दिख रहा है, बट मैन मेड फीचर फिर कहां से आ गया? बिकॉज टैंक के साथ में अगर इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स इट्स एन एम्बैंकमेंट. ओके, तो टैंक तो ठीक है, सीजनल टैंक है, बट अलोंग विथ सीजनल टैंक व्हेनेवर दिस एम्बैंकमेंट इज देयर, एम्बैंकमेंट मीन्स इट्स अ मैन मेड स्ट्रक्चर, राइट? और एम्बैंकमेंट का हाइट आप देख सकते हो, 4R इज मेंशन्ड हियर. Okay, 4 meter, that means the relative height of the embankment is 4 meters. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सबसे सही है, सबसे अप्रोप्रिएट है? C. Okay, so this is the correct answer for this. Now come to next. What does red dotted line represent? Red dotted line यहाँ पर आप देख सकते हो, this always indicates a footpath, symbol of footpath. Okay, then this map extract shows an area which is it is developed, underdeveloped or developing या highly developed. क्या आप बोल सकते हो इसमें, बताओ? इसमें आपको फैसिलिटीज चेक करने होंगे, क्या फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल हैं. यहाँ आप देख सकते हो पुलिस स्टेशन है, राइट? फिर पावर लाइन है, पावर सप्लाई, फिर एक्विडक्ट है, देन डैम है. ओके, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं, डिस्पेंसरी है, ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि ये एरिया एक डेवलप्ड एरिया है, राइट? देन कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज why the tank here is covered. You can see one symbol is there, one square with blue color, right? So this blue colored symbol indicates a tank, covered tank. It's always written over there. ठीक है, तो अब ये क्यों ये कवर्ड टैंक मिलता है किस एरिया में? जनरली ड्रायर एरियाज, एरिड रीजन्स में, क्योंकि वहां पर विंड बहुत तेज ब्लो करती है. दिस इज वन रीजन. एंड वहां पर टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर इज not much easily available in those areas. Okay, that is one point. Number two is that to prevent contamination of water. Number three, to store water safely. If it is covered, it is going to be safe. Okay, so these are the points for this. Clear? So D will be the correct answer. White patch as seen in Sipu River is what is the white patch in Sipu River? This indicates a riverine island. Okay, then next is the railway line shown here is of what type? आप बताओ, ब्रॉड गेज है, नैरो गेज है, मीटर गेज है, या इनमें से कोई भी नहीं है? इसमें आंसर होगा ब्रॉड गेज. ओके, दिस इज अ सिंबल ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन. ओके, so these are a few questions. Then next is what does RS mean? अगर आपको नैरो गेज या ब्रॉड गेज रेल लाइन के पास में इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, ओके, लाइक रेड ब्लॉक्स आर देयर और कैपिटल्स में RS लिखा मिलेगा, दैट मीन्स इट्स अ रेलवे स्टेशन. ओके, तो यहाँ पर ये सिंबल जो है रेलवे स्टेशन को इंडिकेट कर रहा है. मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हियर इज, अब इसमें आपको कौन सा मोड दिखाई दे रहा है? डिस्ट्रिक्ट रोडवे इज द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, then next is blue line seen here is a, what is the blue line which we can see? एक स्ट्रीम है, उसके बीच से ब्लू लाइन, अभी जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था. दिस ऑलवेज शोज अ वाटर चैनल, पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर चैनल. तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर. ठीक है, फिर एनुअल फेयर नेक्स्ट क्वेश्चन में है. एनुअल फेयर, अब ये एनुअल फेयर क्या होता है? आप देखते होंगे कहीं जैसे एनुअली छोटे छोटे जैसे मेले लगते हैं कहीं पर, ओके, छोटे टाउनशिप्स में या किसी बड़े सिटीज में भी कभी जैसे एनुअली इट इज सीन एनुअल फेयर.
तो एनुअल फेयर यहाँ पर देखो आप, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है एनुअल फेयर, इट इज मेंशन एंड इन द मंथ ऑफ मार्च, ओके, एट व्हाट प्लेस, मालगांव। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, एनुअल फेयर इज एन इवेंट व्हेन व्हाट, तो अब इसमें C is the most you can say appropriate answer for this as compared to any other. People gather for offering puja and for entertainment, for trade. यही options mainly आपको दिखेंगे, ठीक है? तो C is the most appropriate answer in this. Next question is which of the following is seen here is a raised metal road. Raised metal road क्या होता है? उसको हम बोलते हैं causeway, right? तो अब यहाँ पर causeway कहाँ है? कॉजवे के लिए एक चीज आपको ये समझना है कि रेज्ड मेटल रोड वो होता है जो एक स्ट्रीम को, जनरली स्मॉल सीजनल स्ट्रीम इज क्रॉस्ड बाय एनी रोड और कार ट्रैक, तो उसको बोलते हैं रेज्ड मेटल रोड, राइट? कॉजवे उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर कॉजवे आपको कहाँ दिख रहा है, ये राइट, रेज्ड मेटल रोड, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉजवे। यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है ये, दिस इज द कॉजवे, ओके। देयर इज अ स्ट्रीम व्हिच इज एक्चुअली intersected by one road, okay, so this is again the answer of it. Then identify the yellowish line to the north of number 40. नंबर 40 के ऊपर येलोइश लाइन क्या इंडिकेट करती है, ये है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ओके। देन नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें लाइन शोन हियर, राइट, व्हाट डज दिस सिंबल इंडिकेट। लाइन आप देख सकते हो बड़े बड़े इसमें बोल्ड अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है LIME, और ये सिंबल हमेशा आपको मिलेगा, राइट, डबल लाइक वन स्मॉल सर्कल एंड लाइक दो कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको मिलेंगे, ये इस और साथ में लाइम लिखा हुआ मिलेगा। मतलब ये होता है कि ये दिस इज एन एरिया वेयर लाइमस्टोन कैन बी सीन, लाइमस्टोन इज एक्सट्रैक्टेड, ओके। और वहां पर जो है लाइमस्टोन से रिलेटेड जो लाइम किल्न्स होते हैं, राइट, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो सी है, सी ऑप्शन, दिस इज द मोस्ट appropriate answer for this. Clear? Next is which among the following is a veterinary hospital? A rectangle with red and blue shade, then blue circle, black structure in northeast part, a blue circle with blue cross in it. Yes, this is the correct answer. Fourth one, D is the correct answer. Okay, blue circle with blue cross under it. Right? This indicates a veterinary hospital. Veterinary hospital means it is related to the animals. Okay, then an antiquity seen here is, antiquity आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आपको समझ में आएगा, कुछ ornamental like कुछ decorative alphabets आपको मिलेंगे, right? ये यहाँ पर आपको मिलेगा, ये this is actually an antiquity, okay? और ये क्या है, ये cave dwelling है, cave dwelling जो है यहाँ पर आपको antiquities मिलेंगे। Then next is falls, 7M indicates जब भी कहीं पर कोई small stream is shown, right, like one black line is there showing us seasonal stream, okay, और उसके बीच में कहीं भी एक जगह पर falls लिखा हुआ आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर है एक लाइन, ये स्ट्रीम को इंडिकेट कर रहा है ये लाइन, ओके, और यहाँ बीच में कहीं फॉल्स लिखा हुआ है और साथ में कुछ नंबर जरूर लिखा होगा बच्चों, 7M 10M, तो ये फॉल्स जब भी लिखा होगा दैट मीन्स इट इज एक्चुअली अ वाटरफॉल, ओके। यहाँ पर ये क्वेश्चन यही सेम चीज दिया हुआ है कि फॉल्स 7M इस पिक्चर में क्या इंडिकेट करता है, तो इट्स अ वाटरफॉल ऑफ हाउ मच हाइट, दैट इज 7 meters, okay, so A is the correct option for this, right? Now come to next question. Next question is what's the RF of this map? RF of this map is 1:50,000, okay, 1:50,000 is the RF scale, right? ये नीचे इसके जो दिया हुआ है ये लीनियर स्केल है, ओके, और जब भी ये स्टेटमेंट मेथड में अगर इंडिकेट करते हैं तो वो हो गया स्टेटमेंट स्केल। सेम स्केल को अलग अलग तरीके से शो किया जाता है मैप में, तो जब भी ये रेशियो फॉर्म में होगा
वहां रेशियो फॉर्म में आपको मैप के नीचे ये इंडिकेट किया हुआ मिलेगा 1:50,000। सिंपल। आपसे अगर पूछते व्हाट इज द आरएफ, आपको बस ये मेंशन कर देना 1:50,000 इज द आरएफ ऑफ दिस। ओके, अच्छा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। फिर नेक्स्ट है 249। इस पिक्चर में 249 क्या इंडिकेट करता है? 249 इज एक्चुअली the height of that point, which is shown with the help of a surveyed tree. Okay, height, the altitude of that point is 249 meters above the mean sea level. Then next is, what does brown patch here indicate? Brown colored patch है, ये आपको exact brown color नहीं दिख रहा होगा, but ये this is actually इस picture में show किया गया है sand dunes को। ओके, ब्राउन डॉट्स जहां मिलेंगे आपको टोपो शीट में, दैट इज ऑलवेज चिल्ड्रन, इट इज अ सैंड ड्यून। ओके, और यहाँ पर सैंड ड्यून की हाइट यहाँ पर शो की गई है। सैंड ड्यून की हाइट क्या है? सपोज 283, 240, 150। तो इसका मतलब ये है कि द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंड ड्यून इज 283 meters. Okay, the altitude of it above the mean sea level. Then next is, what is which is the most appropriate definition? The structure is seen, right? Structure of this, the definition of this structure. Now, what is the definition of this structure? सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो कंटूर्स हैं यहाँ पर, ये क्या शो कर रहे हैं? जैसे एक कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर होते हैं, एक पीक होता है, तो दैट इज ऑलवेज अ कोनिकल व्यू। जब आपको यहाँ पर दिख रहा है 3-4 पीक्स एक साथ में, राइट, दैट मीन्स व्हाट? इट इज ऑलवेज इंडिकेटिंग अ रिज, राइट। और ये ब्राउन लाइंस क्या है? ब्राउन लाइंस आर एक्चुअली द कंटूर्स which are showing the different places having same altitude. Okay, next is green line with black dots to the southwest of Salgaon is a green line। आप ये देख सकते हो, green line के बीच में black dots हैं। okay, तो ये किस चीज के लिए हम यूज करते हैं ये सिंबल? This is always a boundary again. For what purpose it is used? To demarcate the forest boundary. Okay, तो एक एक ये कुछ मतलब बेसिक कुछ मतलब पॉइंट्स हैं जो टोपो शीट से रिलेटेड बच्चों। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस दैट हियर, ओके, इन दिस वे। अच्छा, फिर एक है यहाँ पर आप देख सकते हो सेमी सर्कुलर ब्लैक लाइंस हियर। सेमी सर्कुलर ब्लैक लाइंस यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे देख रहे हो आप सिंबल, ये इसको आप क्या बोलोगे? दीज आर द टोन्स। ओके, नेक्स्ट इज सेटलमेंट पैटर्न्स। हियर इज, आप सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो सेटलमेंट पैटर्न। सेटलमेंट पैटर्न आप कैसे पता करोगे? आपको रेड ब्लॉक्स देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे रेड ब्लॉक्स दिख रहे हैं इस पिक्चर में, सेकंड वाले में, राइट। लेकिन इन ब्लॉक्स के बीच में आपको काफी ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा, मींस दीज आर ऑल स्कैटर्ड, है ना, ये एक जगह पे एक्यूमुलेटेड नहीं है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनके लिए कुछ टर्म्स हैं जो हम टोपो शीट में यूज करते हैं। नंबर वन इज द पैटर्न। दिस सेटलमेंट पैटर्न इज ऑफ व्हाट टाइप? दिस इज अ स्कैटर्ड सेटलमेंट पैटर्न। ओके, स्कैटर्ड, या इसके लिए आप दे सकते हो डिस्पर्स्ड। ओके, डिस्पर्स्ड, DISPERSED। so dispersed या scattered settlement pattern is the same. That will be the correct answer for this. Okay, next is last question for this. Let's go through it, then we'll move to the climate chapter. RF seen here stands for RF. अब यहाँ पर RF is not the representative fraction. Okay, यहाँ पर green colored area में RF capitals में लिखा हुआ है, which that means it indicates a reserved forest area, right? यहाँ पर उसका मीनिंग कुछ और हो गया, राइट। तो दिस यू शुड अंडरस्टैंड वेयर व्हाट सिंबल इंडिकेट्स व्हाट पर्टिकुलर थिंग। ओके, अच्छा, ये हो गया रिगार्डिंग द टोपो शीट्स। अ फ्यू बेसिक थिंग्स आई थॉट टू डिस्कस दैट विद यू। ओके, जस्ट फॉर दैट पर्पस ये सारे क्वेश्चंस मैं लेके आई थी कि कुछ बेसिक्स उसमें मुझे लगे कि आपको बताने बहुत जरूरी है। Okay, now it's time to start with the MCQs of climate chapter, right? Climate of India. First of all, one of the most effective climate deciding factor in India is
you will find several different factors are mentioned. Okay, out of that the most important ones are Himalayas and number 2 is monsoons. Okay, सारे फैक्टर्स में से ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हिमालयाज है। So that's why D is going to be the correct answer for this. Right? Now come to next. Climate of India can be described as tropical monsoon type. Yes, no doubt I think in this tropical monsoon type. Clear? Next, temperature rises up to 50 degrees centigrade at which place during summer season? अब यहाँ पर कुछ प्लेसेस कुछ रीजन्स दिए हुए हैं लाइक 2 स्टेट्स के नाम हैं और कुछ रीजन्स हैं। एक केरला स्टेट दिया हुआ है। केरला ऑलवेज जस्ट थिंक ऑफ इट चिल्ड्रन, केरला इज लाइंग इन विच एरिया? इट इज कवरिंग द मलाबार कोस्ट इफ यू रिमेंबर। तो केरला इज कवरिंग द कोस्टल एरिया। वहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द marine influence. Okay, the influence of land and sea breeze causes the temperature to remain moderate. It never reaches 50 degrees centigrade. Okay, during summers. Rajasthan में possible है. Okay, Rajasthan में possible है. Or run of Kutch again it's a you can say coastal area. तो वहां भी कुछ कुछ उस लेवल तक पहुंच सकता है। और एक है थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट और राजस्थान दोनों रीजन्स में ये पॉसिबल है। यहाँ पर बी और डी दोनों वर्क करेगा बिकॉज थार डेजर्ट इज एक्चुअली कवरिंग मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान ओनली। तो राजस्थान में भी आप ये देख सकते हो कि जब यहाँ 2 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये चीज बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी देखो एग्जाम में एमसीक्यूज वाला जब पोर्शन आपको करना है तो उसमें ऑप्शंस जो दिए होंगे, यहाँ देखो राजस्थान और थार डेजर्ट दोनों एप्लीकेबल है, राइट? बट यहाँ पर कोई भी एक आंसर करेक्ट होगा। ओके, अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है कि विच वन इज मोर सुटेबल। अब आप सोचोगे कि राजस्थान का एक पार्ट थार डेजर्ट है। ओके, राजस्थान इज अ बिग स्टेट। ओके, तो राजस्थान में भी एक पार्ट ऐसा है, ईस्टर्न साइड ऐसा है जहां पर इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं मिलता है। बट एज वी गो टूवर्ड्स एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड वेयर Thar desert is there, always temperature reaches to 50 degree or many times it goes above that. Okay, during summers. So exactly Thar desert is going to be the correct answer for this, or western Rajasthan. तो यहाँ राजस्थान से ज्यादा suitable answer Thar desert है. That's why D will be the correct answer for this. Okay, इस तरह से आपको जहां पर 2 या 3 सिमिलर आंसर्स मिल रहे हैं वहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना है बच्चों। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेम्परेचर मे गो डाउन टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग विंटर्स इन इनमें से कौन से प्लेसेस में 40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर जा सकता है? एक है शिमला, काराकोरम पास, द्रास नियर कारगिल, देन नाथुला पास। Always the C is the best answer for this. Okay. Next question is, the places situated to the vast east-west coastline of India experience which type of climate? Equable or maritime type climate. Okay. Equable or maritime. Reason उसका क्या है? Reason है like due to the influence of land and sea breeze, you will find the equable climate. Then next is the wind which is responsible for winter rainfall in northwestern India. Northwestern India means Punjab, Chandigarh, that area. तो winters में वहां कौन सी wind से rainfall होता है? That is western disturbances. Okay, so western disturbances are going to be the correct answer. Next is the wind which is responsible for winter rainfall. The wind which is responsible for winter rainfall in northwestern India. This is done from where do western disturbances arise? कहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं? These the temperate cyclones, they come from which side? They are coming from Mediterranean Sea. So C will be the correct option under this. Okay, then come to next. Next is the wind which is responsible for winter rainfall in the eastern coast. Eastern coast means which portion we are talking of? कोरोमंडल कोस्ट. ओके, तो कोरोमंडल कोस्ट पे कौन सी विंड से रेनफॉल होता है? अगेन ड्यूरिंग विंटर्स.
विंटर्स में कौन सा मॉनसून यहाँ पर ब्लो करता है? दैट इज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून and it causes rainfall over the Coromandel coast. So D will be the correct answer for this. Difference between maximum and minimum temperature is termed as, this is actually called the range of temperature. Okay, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेगा एग्जाम में जब क्लाइमेट चैप्टर के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन, दिस इज a very common type of questions you will be getting when you will try to solve the question on the climatic data, right? वहां पर एक ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या है और दोनों का डिफरेंस, दैट इज रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर कितना है। तो वो हमेशा, इसका मतलब क्या होता है, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बीच का डिफरेंस जब आप निकालोगे दैट शोज द रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर वो एक दिन का होता है दैट इज कॉल्ड डेली या डायरनल। ओके, इफ इट इज ऑफ 1 मंथ दैट इज कॉल्ड मंथली। और जब हम वो डेटा देखेंगे अलग अलग मंथ्स का मेंशन होता है तो उसमें जब हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस निकालते हैं दैट इज कॉल्ड द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, अच्छा अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वर्ड मॉनसून मीन्स व्हाट? विंड, अ सीजन, अ डायरेक्शन, अ क्लाइमेट। इट इज ऑलवेज अ सीजन। Okay, this is no doubt it's a periodic wind also which affects the seasonal conditions in the Southeast Asian countries, especially Indian subcontinent, and that is why it is actually um, influencing the entire climate of this area. तो बेसिकली इट्स अ विंड, बट जब हम वर्ड जो मॉनसून वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग जब हम बात करेंगे तो उसका मीनिंग होता है सीजन। ओके, मौसम, मौसम एक्चुअल वर्ड था जिससे मॉनसून बना है। ठीक है, मौसम मीन्स मौसम, सीजन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीजन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। दिस इज एक्चुअली द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून। ओके, अक्टूबर नवंबर, right? Next, during summer solstice, the sun directly is over which latitude? It is overhead over which latitude? Tropic of Cancer, right? So this is the summer solstice. Next, the wind which is actually causing, which is known as calamity in the month of Baisakh, Kal Baisakhi, that is the wind. The wind popularly known as nor'wester, नॉर्वेस्टर किसे हम बोलते हैं? लू को, मैंगो शावर को, काल बैसाखी या मैंगो शावर? यस, हम बोलते हैं काल बैसाखी को नॉर्वेस्टर। ओके, हॉट डस्टी ड्राई विंड्स व्हिच ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग मे, दैट इज लू। विंड व्हिच इज गुड फॉर टी इन असम एंड जूट एंड राइस इन वेस्ट बंगाल। इन क्रॉप्स के लिए कौन सा विंड अच्छा होता है? अगेन इट इज, yes, because we are talking of Assam and West Bengal, so it is always Kal Baisakhi, right? Then a wind which is important for mango, tea, coffee plants in South India. South India means here we are talking of the cherry blossom. Okay, cherry blossom, which is actually again a local wind which blows in that area. Then southwest monsoon breaks first on which coast? This is Malabar coast. Okay, or you can say which state experiences that? That is always Kerala, right? Thar desert receives less rainfall due to, what will be the answer? North south direction of Aravalli mountains, which are not actually interrupting the southwest monsoons, and that's why these monsoons just cross over that part without causing any rains in that area, thus developing that area into a desert. Okay, so this is going to be the A option will be the correct answer for this, right? Next question is the wind which is responsible for the winter rainfall in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Winter rainfall Tamil Nadu और Andhra में कौन से wind से होता है? Again, northeast monsoon winds. Okay, when they cross over the Bay of Bengal region, these winds get some moisture from there, they cause rainfall over the coastal area. Clear? So B is the correct option for this, right? Next is sultry and oppressive weather during the withdrawal of monsoon is termed as, what will be the correct
name for this. This is called as October heat, right? October heat. This is an important feature of the retreating of monsoon. Okay. Next, which place in India receives the heaviest annual rainfall in the world? This is actually Thiruvananthapuram. Heaviest annual rainfall. Name the wind that brings rain to the Tamil Nadu coast. Tamil Nadu coast is getting rainfall basically by the northeast monsoons. One part of India that receives rainfall in winter and summer as well is you'll find the Punjab region, because Punjab region is getting winter rainfall by the western disturbances as well as the summer rainfall by uh, both sides, right? Both the monsoons. That means southwest monsoons from both the sides, from Arabian Sea side also, from the Bay of Bengal side also. So it is getting sufficient rainfall during summers as well as winters. Okay. Then Kanyakumari, Vishakhapatnam, Mumbai, Panji experience an equable climate, and the reason for that is what? Coastal location, nearness to equator, influence of northeast monsoon, interior location. The answer will be the A is the correct option for this. Okay, coastal influence. Next question for this is, name one area which gets more than 200 centimeters of rainfall in India. Windward side of Western Ghats. Okay, C will be the correct answer for this. Jaipur, Bhopal, Coimbatore, Patna, all these are lying in the interiors. Experience a continental type of climate. Okay, what is the reason for that? Interior location. C is the correct answer for this. Right. Next, central Maharashtra receives little rainfall due to, what will be the correct option? Coastal location? No. Location in the leeward side of the Western Ghats. Correct. So B is the correct option for this. Okay. It is lying on the leeward side of the Western Ghats. That's why it is getting less rainfall. Right. Next question, Mangalore is cooler in summer as, yes, it is lying on the very close to the coast. So it is, Mangalore is actually under the influence of land and sea breeze. So it is experiencing equable climate. C is the correct option for this. Right. Next, what is the direction of monsoon winds? Yes. What is the direction of monsoon winds during summers? Summers में इनका direction होता है southwest monsoons, right? What type of wind is monsoon? It's a periodic wind. Correct option is C. Name the wind which brings heavy rainfall to Cherrapunji. It is C option is the correct option for this, southwest monsoon winds with Bay of Bengal branch of it. Okay, that is the correct answer for this. Local wind that brings a little rainfall to South India and is good for tea and coffee crops. This is always cherry blossom. Okay, this we have discussed in the earlier part. Konkan coast experiences orographic rainfall due to, yes, it's due to the location near the Western Ghats. Okay, so this is actually because of the Western Ghats, it is getting the orographic rainfall. Okay. Now come to next question. Next question is, the agricultural benefits derived from the Kal Baisakhi in Assam is, it is good for which crop? Tea, sugarcane, wheat, barley. Out of all these four, tea is the most appropriate answer because tea cultivation is done in that area a lot. Okay. Next is, duration of summer seasons in India is. Duration. ये एक important question है बच्चों, ये जरूर आप कर लेना. सॉरी, क्लाइमेट चैप्टर में. और ये एमसीक्यू में भी आता है, जनरली नॉर्मल क्वेश्चंस में भी पूछते हैं कि जो समर सीजन का ड्यूरेशन क्या है, रेनी सीजन का ड्यूरेशन क्या है. तो ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए, हमेशा दिमाग में होना चाहिए. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है समर सीजन कब होता है. तो फॉर दैट एग्जैक्टली यू हैव टू मेंशन द मंथ्स. ओके, right? March to May is generally taken as the summer season in India, right? So D is the correct option. Then duration of rainy season in India. Rainy season again, the monsoon season. The monsoon season kaun sa hoga? June to September is the correct answer for this. Okay. Then word monsoon, this is done. Then the season which extends from October to November, this is what season? It is actually retreating southwest monsoon season. Right? Next is the wind which is known as calamity in the month of Baisakh. This is Kal Baisakhi. Right? Wind popularly known as nor'wester. This is actually Loo, mango shower, Kal Baisakhi. कौन सा होगा? Yes, nor'wester, mango shower. Right?
Then hot, dusty, dry winds which blow in the northern plains during May, that is Lu. Wind which is good for tea in Assam and jute and rice in West Bengal, that is always the Kal Baisakhi. Clear? Now come to next, the wind which is, sorry, just 1 minute. The hills responsible for heavy rainfall in Mawsynram, the answer will be Garo and Khasi hills. Okay. Then next is, which place in India, one part of India that receives rainfall in winter and summer as well is Punjab, right? This is again correct. Then come to next, Kanyakumari. Kanyakumari is actually Kanyakumari, Vishakhapatnam, Mumbai, Panji. These are the places, if you just think of it, these all places are lying on the coast. Okay. Or very close to the coast. So what type of climate does they actually experience? यहाँ पर होगा coastal location. Coastal location की वजह से यहाँ पर equable climate होता है. ठीक है. अगर ये क्वेश्चन आता है कि इन प्लेसेस पे कौन सा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं ये प्लेसेस, तो वहां पर हो जाएगा इक्विबल क्लाइमेट. अगर ये आता है कि दे एक्सपीरियंस इक्विबल क्लाइमेट ड्यू टू व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, यहाँ पर ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से आपका आ जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज कोस्टल लोकेशन ऑफ इट. Okay. Then which winds are responsible for the rain experienced over the greater part of India, maximum part of India? Maximum part of India gets rainfall during the rainy season. Okay. And during rainy season, we get mainly which monsoons? That is southwest monsoons. Okay. So that will be the correct answer. Name one area which gets more than 200 centimeters of rainfall in India. कुछ selected areas हैं. Western slope of the Western Ghats, okay, windward side of the Western Ghats, northeastern hilly regions, okay, then Andaman Nicobar island groups. तो यहाँ पर आपको कौन सा point मिल रहा है? यहाँ पर है, देखो आप, windward side of the Western Ghats. Windward side of the Western Ghat is the most important and the most appropriate answer for this. Okay, that gets actually rainfall beyond 250 centimeters. So that is again the correct answer. C option is the correct answer. Jaipur, Bhopal, Coimbatore, Patna experience a continental type of climate due to what? Due to their internal location or the interiors में location है. That's what. So C is the correct option for this. Okay. Then in central Maharashtra receives little rainfall due to location on the leeward side of the Western Ghats. Western Ghats के दूसरी side, and that is the leeward side always gets less rainfall. तो ये reason इसका है. ठीक है. Mangalore is cooler in summer. As summers में high temperature होना चाहिए, but Mangalore, because it is lying in the coastal area, so it is under the influence of land and sea breeze. Okay, so it is not so hot. Okay. Then what is the direction of monsoon winds during summer season? Summer season में इनका direction क्या होता है? इनका direction होता है, yes, southwest to northeast. मतलब हमेशा बच्चों ये याद रखना, the winds are called by the direction from where they come. Okay, southwest monsoon जब हम बोलते हैं, मतलब ये winds जो हैं, they are coming from southwest direction towards the northeast direction they are going. Okay. Winters में जो monsoons आते हैं, they are coming from northeast direction. That's why these are also called by the name northeast monsoons. Understood? तो यहाँ पर आपका question है कि what is the direction of monsoon winds during summer season? तो यहाँ पर आप दोगे B is the correct option for this, right? Then next question. Next question is the local wind that brings a light rainfall to South India and is good for tea and coffee crops also. It is cherry blossom, right? This is the correct answer for this. Next comes the Konkan coast experiences orographic rainfall due to Konkan coast में orographic rainfall क्यों होता है? क्योंकि its location near the Western Ghats. That is the most appropriate answer for this. Okay. Then next is the duration of rainy season in India is actually June to September, right? That is the correct answer for this, right? Now the next is, let's see. Name the wind that brings rain to the Tamil Nadu coast. It is northeast monsoons. One part of India that receives rainfall in winters and summers, Punjab.
Which winds are responsible for rain experience over the greater part of India? Southwest monsoons, right? Then duration of rainy season in India, it is actually June to September. Done. Now come to the next chapter, that is soil resources in India. This is again an important chapter for you. The type of soil found in the Indo-Gangetic plains. Indo-Gangetic plains are known for the alluvial deposition. Okay, तो वहां पर कौन सा soil आपको मिलेगा? Alluvial soil. Okay, A is the correct answer for this. Now, next question for the soil is the type of soil found in Malwa Plateau. It is black soil. Which of the following methods does not help in soil conservation? Plowing up and down the slopes, right? Rest all are the methods of soil conservation. आप देख सकते हो इसमें contour plowing, that is one method. Then creating shelter belts, then strip cropping, ये सारे जो हैं soil conservation के methods हैं. But plowing up and down the slopes, that is not the method which is used in it. Okay. Then next is alluvial soil consists of all the three, right? Sand, silt, and clay. Laterite soil is useful for growing which crops? Tea, coffee, and cashew nut. That is B option is the correct answer. Okay. Black soil is deficient in, yes, phosphoric contents. So D is the correct option for this, right? Soil formed by intense leaching is which soil? Alluvial soil, laterite soil, black soil, या red soil. इसमें laterite soil आएगा. ठीक है? That is the result of leaching. Which of the following states mostly has laterite soil? Meghalaya. Okay. Next is which of the following soil is ideal for growing cotton? Black soil. That's why it is also called by the name black cotton soil. Right? Regur soil, black soil is also known as regur soil, bhangar soil, father soil, or river soil. Regur soil. Okay. Agricultural production depends on fertility of the soil. ठीक है? ये चारों options में आप देखो, the B is most appropriate answer for this. Presence of soil, color of soil, texture of soil, तो ठीक है. But fertility of the soil affects immediately the agricultural production. ठीक है? Loose material which forms the thin surface layer of the earth is called soil, right? Then soil formation is related to parent rock, material, relief, climate, and vegetation. All these. Okay. Soil का जो formation होता है बच्चों, it is actually the result of all these elements. So we can take the D as the correct option. Soil is formed from, you can see the first point under this is denudation and disintegration of rocks. Vegetation से बनता है, fossil fuel से बनता है, या wood से बनता है. It is the result of denudation and disintegration of rocks. Okay. Next question. The process of soil formation is called crystallization, pedogenesis, purification, respiration, pedogenesis. Okay. Which is the term given for the formation of soil. Then soil is a mixture of inorganic material, minerals, organic material, yeah, all of the above. All of the above is the correct option for this, right? Next, the substance present in the soil in the form of small crystalline grains, that is silica. Next, ultimate form of organic matter, which is termed as humus. Removal of topsoil by different agents of weathering is called by the name soil erosion. Removal of topsoil. Okay. Then next, agents of soil erosion, yeah, weathering are which of these? Running water, wind, overgrazing, all of the above. D will be the correct answer for this. Okay, because all these are there. Then the way of soil erosion in layers is known as what type of erosion is that? Sheet erosion, splash, gully, rill, sheet erosion. Because layer by layer, when it is removed, just like a sheet of paper, that is called sheet erosion. Okay. Then the way of soil erosion, whereby due to heavy rains, a surface film of water carries away the even surface layer of topsoil. Again, a thin sheet, a thin film of, you can say, soil is taken away by the water, and which is called by the name sheet erosion. Okay. Next question, the way of soil erosion, whereby on steep slopes, in absence of any vegetation, water flows downhill, developing a channel. Channel means it's going to be gully erosion. Okay. So यहाँ पर आपका C option correct होगा.
Soil erosion is common in desert area due to, yes, due to lack of vegetation. Next, upper soil surface becomes loose and susceptible to wind erosion due to lack of moisture. Okay. Next, which is a faulty method of agriculture? Shifting agriculture. Right? That's why it has been banned in many of the countries. Then next is the effort made by man to prevent soil erosion to retain the fertility of soil. इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा सही आंसर होगा? That is always soil conservation, which actually means the various methods, various efforts which are made by people to prevent soil erosion or to conserve soil. Okay, so soil conservation, right? Next, soil conservation is important for our national economy as productive soil ensures prosperity in agriculture, correct. Number two, industrial development, correct. Economic development, correct. So all these three are applicable. That's why D will be the correct option for this. Next question, a way to increase area under forests. Which one is the correct answer for this? Afforestation means plantation of trees. Okay. Next, crop rotation improves moisture in the soil, fertility of the soil, texture of the soil, color of the soil. It will be fertility of the soil, right? Next, best method to prevent wind erosion. इसमें कौन सा best method हो सकता है? Belts of trees and shrubs should be planted. Okay. Next, in situ is the soil formed by transportation from the underlying parent rock, from volcanoes, या इनमें से कोई भी नहीं, none of the above. कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है? इन सितु. इन सितु मीन्स the soil which is formed at the same place, right, by the weathering of the underlying rocks या parent rocks. तो यहाँ पर आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन समझ में आ रहा है? It is actually B. B is the correct answer for this. Okay. Next is soils of extra peninsular India are formed by first one is transported or residual alluvium. Next is from the underlying parent rock. Next is volcanoes. Then none of the above. Transported या residual alluvium. Okay. Then next question. ICAR. ICAR is actually the full form of this is what? Indian Council of Agricultural Research. So यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा. देन नेक्स्ट है यंग खादर सॉइल इज अ यस इट्स अ old alluvium, new alluvium, high alluvium, या none of the above. New alluvium. That will be the correct answer. Bhangar soil consists of what? It is older alluvium. Right? Next question. Older alluvium. Okay. Then khadar soil contains, yes, खादर soil contains silicates, pebbles and gravels, fine sand and clay, calcium. क्या आएगा इसमें? Fine sand and clay. खादर soil, right? खादर soil is always the you can say newer deposition of alluvial soil. Okay. तो हमेशा उसमें particles जो हैं बहुत fine particles आपको मिलेंगे. तो यहाँ पर best option आपका होगा C, right? Fine sand and clay particles. Next question, soil found at the lower levels near the rivers, khadar soil, nearest to the flow of river, because it is deposited recently. As we go away from the flow of water, you will find the outer part of the course of river. The soil becomes actually its texture becomes a little coarser. ठीक है, थोड़े बड़े particles मिलेंगे आपको और उसे बोलते हैं बांगर soil, right? Soil found 30 meters above the flood level of rivers. That is actually Bhangar soil. Soil enriched by fresh silt deposits every year. Ye khadar soil. Then next, alluvial soil is rich in potash. Then next question is, this soil is also called river soil. कौन से soil को हम बोलते हैं river soil या riverine soil? Alluvial soil. और उसका reason क्या है? Because most of the time you'll find the river basins are having actually this soil. That's why it is called by this name. In the delta region, alluvial soil is ideal for the cultivation of, yes, jute. Right?
alluvial soil of Deccan coastal strip is dark in color. ये important question है बच्चों, ये ध्यान से आप सुनना. Alluvial soil of Deccan coastal strip is dark in color because of what? Because dark color का क्यों होगा? क्योंकि वहां पर जो है, जो रिवर्स हैं, वो आफ्टर क्रॉसिंग द डेक्कन प्लेटो, they are actually before they join the sea, okay, the Bay of Bengal, they form a delta. तो वो rivers जो after crossing the igneous rock area, okay, right, from that part if they are coming, black soil region they are coming, so naturally they carry some sediments from there, and that's why they cause the formation of delta or the formation of the entire coastal strip of darker color. This is the reason. तो यहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, rivers of Deccan Plateau flow through black soil. Okay, A is the correct option for this, right? Next is the soil originated from solidification of basic lava. Basic lava से कौन सा soil बनता है? Black soil. Soil that retains moisture and becomes sticky when wet. Again, black soil, because it has got clay content within it, right? Because of that nature, when it gets wet, जब वो गीला हो जाता है, तो कुछ clay type का, चिकनी मिट्टी type का nature इसका बन जाता है, ठीक है? और जब ये सूख जाता है, तो उसमें cracks develop हो जाते हैं, right? This is the nature of black soil. ओके, अच्छा, ब्लैक कलर इन ब्लैक सॉइल इज ड्यू टू व्हाट? अब इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, ब्लैक क्रिस्टलाइन शिस्ट एंड बेसिक नीसेस. ओके, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज गॉट द ब्लैक कलर, राइट? नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल इज वास्टली confined to Indo-Gangetic plains, Deccan Plateau. Third is it Northern Himalayas. Which is the correct option for this? Deccan Plateau. Okay. Next, the soil formed due to weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks. कौन सा soil बनता है इससे? Red soil. That's why in a vast, you can say larger part of peninsular India, black soil is found in the Deccan Trap region, especially, right? The rest of the maximum part is covered with the red soil. Okay. Then red soil is red in color due to the presence of what? What is actually the element which causes its red color? This is iron oxide. Okay. Red soil is rich in what? Potash. Okay. Then the word laterite. Laterite in Latin means brick. Okay. Brick. Brick is the literal meaning of it. Right. Then next, soil formed under conditions of high temperature and heavy rainfall. Right? Alternate wet and dry period. This is the most ideal condition for the formation of laterite soil. Okay. Then next question, the formation of laterite soil is strictly under volcanic eruptions, flow of river, monsoon conditions, sediments. Monsoon conditions, I think this is the most correct answer, because monsoon conditions can alternate wet and dry condition, that we can find here, which is actually required by the laterite soil. Next question is, the soil hardens like iron when exposed to air. अब इसका क्या correct answer होगा, आप बताओ? Yes, correct answer for this is going to be जब वो soil सूख जाता है, तो वो एक बहुत ही hard आयरन की तरह से हो जाता है. ये है लेटराइट सॉइल, और बिकॉज ऑफ दिस नेचर ओनली चिल्ड्रन, यू नो, इस पर्टिकुलर नेचर की वजह से लेटराइट सॉइल को बहुत ज्यादा इसका डिमांड है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस. दिस इज द नेचर ऑफ सॉइल विच इज मेकिंग इट इम्पोर्टेंट फॉर दैट. ओके, अगर गिव रीजन में आता है तो ये आप लिख सकते हो उसमें, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is the soil found in the summits of Western Ghats and Eastern Ghats. Not only summits of Western and Eastern Ghats, you'll find over almost in the northeastern portion also, over the summits of the northeastern hills, right? Western Ghats, Eastern Ghats, Aravalli hills. So these hills and mountains at in the upper part of it, right? This particular soil is found, that is laterite soil.
Clear? Then next question is the soil good for both Rabi and Kharif crops, alluvial soil, naturally. Alluvial soil is considered as the best for almost all type of crops. So when we talk about Rabi and Kharif, this is the most suited one. Okay, the soil found in the eastern coastal part of the Deccan Plateau. Yes, eastern coastal part, alluvial soil. Laterite soil lack in fertility due to, yes, intensive leaching, because laterite soil is formed by the leaching process. Okay, next question. A residual or sedentary and non-transported soil is, out of all these, which one? Black soil, laterite soil, red soil? तीनों में से कौन सा है? या तीनों है, all of the above? Yes, D is the correct answer for this. Because in India, at least, when we study about these soils, these three, all these three are the residual soils. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेड या एक्स सितु सॉइल कौन सा है इंडिया में? अब इनमें आप चार नाम देख रहे हो, इसमें अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट, रेड सॉइल. बाकी तीन, ब्लैक सॉइल, लेटराइट एंड रेड सॉइल, these all are the in situ soil. That means they are formed at the same place of their origin, but uh, they are found at the same place. But the transported soil या ex situ soil जो है, ये alluvial soil होता है, because it is actually the particles are taken from different parts by various agents of erosion, and these are deposited at somewhere else, at some other place, right? So this is how this soil is formed. So it is called transported soil, right? Next is the river deposits very fine particles of soil called alluvium. Okay, soil known as riverine soil. Which soil is called by this name? Alluvial soil. Right. Next is alluvial soil is known as riverine soil because this we have done earlier. It is mainly found in the river basins. Right. Then alluvial soil found on the plains are called. See, regarding this also I must tell you one thing. Plains में जब आपसे पूछते हैं तो that is called inland alluvium. Inland means surrounded by land. Okay. जब alluvial soil, next question आप देखो, next question इसी से related है. Alluvial soil found on the deltas, right? Deltas में जो alluvial soil मिलेगा उसको हम बोलते हैं deltaic alluvium, right? First one was inland, second is deltaic. और एक और टाइप इसमें आपको मिलेगा, alluvial soil found on the coastal strips, coastal plains of India, right? Especially the eastern coast. तो वहां पर आपको कौन सी सॉइल मिलेगी? अगेन alluvium soil होगी, right? Alluvial soil ही मिलेगा वहां पर, but that is called by some other name, that is coastal alluvium. One was inland alluvium in the interior parts, okay? Deltaic alluvium in the deltaic region, coastal alluvium in the coastal plains of India, especially the eastern coastal plains, right? Why? Because western coastal plains बहुत ही narrow है, right? Next, alluvial soil is dry, porous, sandy. In which part? Dry, porous, sandy. Sandy means the coarser particles are there. Means we are talking of the upper course of the river, right? तो यहाँ पर कौन सा पोर्शन हम बात कर रहे हैं? लोअर गंगा वैली, अपर गंगा वैली, ब्रह्मपुत्र वैली, अपर गंगा वैली. Next question is the alluvial soil is compact, less coarse and moist. अब उसी का just opposite दे दिया यहाँ पे. The alluvial soil is compact, less coarse. Less coarse means it's having fine particles now, and it is moist. So always it is found in the lower course of the Ganga river. So lower Ganga valley में मिलेगा. ठीक है? Soil known as lava soil. Which soil is called by this name? Black soil. Reason, because it is formed by the you can say disintegration of lava rock, or the other way we call it by the name igneous rocks only, right? Which are the result of solidification of lava. So that's why it is called black soil, is also called many times by the name lava soil. Okay. Then black soil expands when wet and becomes difficult to plow because of high clay content. Yes, because clay, which is present in large amount, that makes it very sticky. Okay, so it becomes quite difficult to plow that land. Okay, then big cracks in black soil during dry season helps in circulation of air. Okay, that makes it very important for the cultivation of crops, right? This nature makes it very important. Then in any season, this soil has moisture stored in its subsoil.
इनमें से कौन सा सॉइल है जो जिसका ये नेचर है? दैट इज ब्लैक सॉइल. Yes. Then moisture retentiveness of this soil makes it suitable for dry for farming in summers. अब इन चारों में से कौन सा soil सबसे important है? Black soil. Again, then laterite soil is red in color due to the presence of iron oxide. Correct. So option will be A. Then red soil looks yellow. This is again an important question. When does this soil looks yellow? It is found yellowish color when it occurs in hydrated form. Okay, then it is yellowish color. Red soil is ideal for dry farming as it is formed in poor rainfall areas. That is the correct answer for this, A. Okay, next, the process in which the nutrients get percolated down below the soil due to heavy rainfall and thus leaving the topsoil infertile. इनमें से कौन सा हो सकता है? सॉइल इरोजन? नहीं. ग्रेडेशन, डिपोजिशन, लीचिंग? आई थिंक आउट ऑफ ऑल दीज लीचिंग इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस. लीचिंग प्रोसेस क्या है? लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट व्हिच आर प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल, ओके, दैट मिक्सेस विद वाटर. और जब वाटर सीप डाउन करता है, राइट, वाटर जब नीचे जाता है, इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल. Along with that, all the nutrients also go down. Okay, thus leaving the uppermost layer of the soil, या जिसको हम top soil बोलते हैं, thus leaving that soil as infertile या less fertile. ठीक है, तो ये process होता है leaching. Next, leaching is also called desilication. Yes, correct. This is the correct answer for this. Then soil which is acidic in nature, इनमें से कौन सा soil है? Alluvial soil? No. Black soil? No. Yes, laterite soil. Correct answer. Okay. Then next is movement and deposition of soil particles by wind is called wind erosion, naturally. Next, a scheme for reclamation. Again, this is important. A scheme for reclamation and development of river areas was launched in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan. Sub states में ये introduce किया गया था, right? So the correct option for this is D, all of the above states. Then shifting cultivation is practiced in Northeast India. This is one very important problems in the northeastern hilly regions. Okay, the shifting cultivation. Then next is breaking up of rocks due to climatic factors. It is weathering. Clear? Then in the upper course, the texture of alluvial soil is upper course. Upper course means the in the entire flow of the river, the upper part of it. First stage of the river. Generally, the particles are quite, these are coarser, right? Size of the particles are bigger. And in the lower course, you will find just opposite of that. These become fine. Okay. Then laterite soil is unsuitable for cultivation of crops because of what nature? इसमें ये चारों चीजें आएंगी. That means the D option is correct. That is, it is heavily leached. Number one. Number two, it is acidic in nature. Number three, it is non-moisture retentive. Okay, this capacity of the soil is not there. Like in black soil, it is very high. You can say moisture retentive, but here laterite soil is not. So ये सारे points जो हैं important है, which actually makes it unsuitable mostly for the cultivation of any type of crops. Okay, then khadar soils are preferred to bangar soil because khadar soil, see, all these options will work in this case. Number one, they have fine silt in clay, right? Number two, they are very fertile. Number three, they are replenished every year by floods. Means जो water flow के एकदम नजदीक वाला जो part होता है, वहां पर आपको जो soil मिलेगी, that is khadar soil. और इसी वजह से, because it is replenished every year, it is renewed. Okay, again and again, fresh new deposition is there. So that is why that soil is considered as the most fertile. It is more fertile than bangar soil. And this is the reason it is always preferred to bangar soil. Okay. Then soil erosion by wind is common in arid regions due to, इसका reason क्या हो सकता है? Due to lack of vegetation, number one, correct option. Number two, lack of moisture. Yes, this is also correct. And soil is loose. I think all the three options are correct, right? And that makes actually वहां पर क्योंकि moisture कम है, तो water is not the main agent of erosion. Okay,
There the main agent of erosion is wind, right? And because the soil particles are loose, so this wind, when it blows uninterruptedly, like vegetation creates obstruction. अगर वहां पर vegetation कम होगा, तो winds will blow with a high speed. That makes these soil particles to be carried easily by these winds from one place to the other. Okay, this is only called the soil erosion, right? And that's why in arid regions, the wind erosion is actually more important. Okay, then man is largely responsible for soil erosion because of अब हाउ ह्यूमन बींग्स हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन के लिए हमारे आप बोल सकते हो प्रॉपर जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं ट्रेडिशनल आउटडेटेड मेथड्स हम यूज करते हैं वो एक पॉइंट हो गया नंबर टू कैन बी द डिफॉरेस्टेशन फॉर एनी पर्पस राइट डिफॉरेस्टेशन किसी भी रीजन से अगर हम करते हैं whether for the construction of buildings, whether for the construction of roads, or for agricultural land, we want more and more. Okay, yeah, for industries and all, for any reason, जब भी हम deforestation करते हैं, that means we are responsible for soil erosion. Next is mining, actually, because in several areas you'll find mining is done on large scale. It is going on in different parts. So mining, again, we are digging out the land for that purpose, and naturally it is soil erosion. It leads to soil erosion. Okay, तो ये सारे human activities जो हैं ये responsible हैं. तो I think D option will be the correct option for this. Okay, next question. The transported soil most widely found in India, alluvial soil. Long and deep cracks in black soil helps in oxygenation. Okay, or the other way you can say it helps in self ploughing of the soil. Okay, next is soil good for cultivation of sugar cane. इन सारे सॉइल्स में से बेस्ट सुटेड सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल माना जाता है. ठीक है, लेटराइट, ब्लैक, रेड या माउंटेन, इन चारों में से ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट सुटेड सॉइल फॉर द शुगर केन कल्टीवेशन. ठीक है, देन सॉइल दैट मेक्स अप द डेल्टा ऑफ रिवर गंगा. कोई भी डेल्टा, राइट, कोई भी रिवर्स के डेल्टाज अगर होंगे वहां पर द फर्स्ट choice can be alluvial soil, right? So because alluvial deposition is there in the deltas, that is why this is the correct option. Soil that is most suitable for cultivation of cotton, black soil. This we have done in the earlier part. So because of that only it has got the name black cotton soil. Okay, at least in India we are getting this soil best suited for the cultivation of cotton. Okay, next question. The soil which is sticky when wet and cracks when dry, that is black soil. Soil that covers almost all of West Bengal, alluvial soil. Gully erosion is caused in which area is actually known for gully erosion? In entire India, if you see, desert region, Chambal region, plateau region, coastal region, if you just check all these regions, Chambal region is actually known by this name because of the river which is flowing through that area, that is Chambal River. Okay, so that area, the area near the Chambal River, that area is actually known for gully erosion. Okay, very deep ravines are found in that area near Chambal River, and that's why it is called the Chambal Ghati. ओके, चंबल घाटी के नाम से उसको जाना जाता है और वहां पर बहुत ज्यादा डीप रिवाइन्स बने हुए हैं. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गली इरोजन इन इंडिया. ठीक है, देन विंड इरोजन इज मेनली कॉज्ड इन, विंड इरोजन यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? डेजर्ट रीजन में, माउंटेनस, प्लेटो, कोस्टल, कहाँ पर आपको सबसे आप बोल सकते हो कि बेस्ट एग्जांपल इसका कहाँ आप देख सकते हो? दैट इज डेजर्ट एरिया. Okay, then soil can be conserved in arid and semi-arid regions by, अब यहाँ पर देखो आप ये points दिए हुए हैं, how we can reduce soil erosion या how we can conserve soil erosion, right? How we can conserve the soil. अब ये points जो हैं ये आपको cover करना बहुत जरूरी है because इससे related questions भी अक्सर पूछते हैं, not only in MCQs, in general also the questions comes from this particular topic. दो ऑप्शन, दो मेथड्स आप बताइए कंजर्वेशन के, सॉइल कंजर्वेशन के, which can be actually practiced in the arid regions, which can be practiced over the mountainous area,
तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस एरिया में अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो वहां पर कौन सा प्रैक्टिस, कौन सा मेथड जो है सॉइल कंजर्वेशन का वो वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो ये चीज आप जरूर कवर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है सॉइल कैन बी कंजर्व्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। एरिड सेमी एरिड वो होता है जो ड्रायर एरियाज, राइट। तो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, बाय प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। देन सॉइल कैन बी कंजर्व्ड इन रिवर वैलीज प्रोन टू फ्लड। यहाँ पर हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड बैराजेस। Okay, here you can see the point is given, conserved in river valleys prone to flood, means lot of water is flowing in that part, so it is actually, it can cause flood. So to reduce that, to have the conservation of soil, we need to reduce the chances of flood, and that we can do by construction of dams and barrages. Okay, ये हो गया. The next question is the type of farming which you can find in this particular picture. Which type of farming you can see? Is it crop rotation, terraced farming, contour plowing, या mixed farming? Terraced farming. Okay, terraced farming हिंदी में इसको बोलते हैं सीढ़ीदार खेती. आप देख सकते हो, it's just like terraces, right? और the सीढ़ियों की तरह से नजर आ रहा है, इस वजह से इसको सीढ़ीदार खेती भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल फाउंड इन द रीजन थ्रू विच द रिवर फ्लोज। यहाँ पर इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में एक रिवर सिस्टम को दिखाया हुआ है, दैट इज गंगा रिवर सिस्टम। ओके, अब ये पूरा एरिया जहां से ये रिवर्स फ्लो कर रही हैं, ये पूरा एरिया जो है ये प्लेन्स का एरिया, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, राइट। और ये एरिया जो है विच इज एक्चुअली नोन फॉर व्हाट टाइप ऑफ सॉइल। It is believed that this is the plain which is formed by the deposition of a thick layer of alluvial soil, right? Since long time it has been actually going on. So that has resulted into the formation of this northern plains of India. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, the soil found in the region through which the river flows. मतलब हम northern plains की बात कर रहे हैं, ये कौन सा soil से बना हुआ है, आप बताओ। अभी हमने डिस्कस किया alluvial soil, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल आइडियल फॉर क्रॉप गिवन बिलो। ये कौन सा क्रॉप आपको शो, मतलब इस पिक्चर में क्या आपको नजर आ रहा है, कौन सा क्रॉप? दिस इज टी कल्टीवेशन। ओके, वुमेन इज डूइंग दिस, तो टी कल्टीवेशन है या कॉफी या कैश्यू नट या कोई भी इस टाइप की अगर कल्टीवेशन, इन क्रॉप्स के कल्टीवेशन है, तो यहाँ पर लेटराइट सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर दिस। ओके, देन सॉइल विच ओरिजिन्स थ्रू द प्रोसेस शोन बिलो। यहाँ पर कुछ कुछ आपको लग रहा होगा कुछ ये क्या चीज है, दिस इज एक्चुअली द लावा विच इज एक्चुअली कूलिंग डाउन। ओके, अब लावा with which soil we can relate that, which soil is known, also known many times by the name lava soil, black soil, ठीक है। तो यहाँ पर black soil correct answer होगा। then next question is which of the following soil have the attributes of cracks and shrinking in dry conditions? Black clay soil, black cotton soil, या black clay soil. Okay, which of the following soil has air space and loosely packed? Out of all the different type of soils, clay, loamy, all these, you will find sandy soil is that which is actually having a lot of air space within it. Pores actually जो particles हैं, they are very loose. Naturally air spaces बहुत होते हैं उसमें. And the second point which is given is loosely packed naturally. So that is the sandy soil. Okay, next coffee cultivation is best suited in black soil, alluvial soil, red soil, laterite soil, laterite. Okay, then next, dead and decaying material produced by plants in the soil is called, which is the correct option? Humus, second option. Removal of top layer of soil is called by what name? Soil erosion. Okay, next question, which of the following statements regarding laterite soils of India are incorrect? अब आप देखो इनमें कुछ statements दिए हुए हैं, ठीक है। They are generally red in color, correct. Then next is they are rich in nitrogen and potash. Okay, fine. They are well developed in Rajasthan and UP. No. Next is tapioca and cashew nuts grow well on these soils. अब इसमें आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है?
कौन कौन से या कौन सा एक. अब इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं नीचे. करेक्ट आंसर कौन सा है? 1, 2 and 3 आर करेक्ट? नो, बिकॉज थर्ड इज टोटली रॉन्ग. ओके, इवन सेकंड इज रॉन्ग. तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर है सी, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ. That is, it's red in color and it is good for tapioca, cashew nuts, coffee, tea. ठीक है, तो 1 and 4 दैट इज करेक्ट. तो सी ऑप्शन यहाँ पर मोस्ट सुटेबल आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल? फॉस्फेट. ठीक है, फॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. देन सॉइल फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज पेडोजेनेसिस. ठीक है, पेडोलॉजी होता है, इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. पेडोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, सो द बी इज द करेक्ट आंसर. ऑलमोस्ट ऑल सॉइल्स लैक दिस मिनरल. कौन से मिनरल नहीं मिलते हैं या बहुत कम मिलते हैं सॉइल में? नाइट्रोजन. ओके, देन प्रोसेस बाय व्हिच soluble minerals dissolve in rainwater and percolate to the bottom, leaving the topsoil infertile. अभी हमने जो पहले वाले पोर्शन में डिस्कस किया था, लीचिंग इज द प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स इन फ्लड रीजन्स. ओके, which is the correct option for this? Contour ploughing, afforestation, shelter belts, plugging of gullies. Yes, shelter belts is the most correct answer for this, right? Then next is, give a suitable geographical term for this, right? For this process by which rainwater flowing in definite path removes the topsoil, thus causing deep cuts to the surface of land. आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? Deep cuts in the surface of land means gully erosion we are talking about, right? Then next is identify the image. अब इसमें कौन सा मेथड यूज किया गया है? नंबर 1, contour ploughing. Contour ploughing क्या है? It is along the contours on a slope, prevents soil erosion by water where contour acts as a bund. Terrace farming क्या होता है? On hilly slopes, terraces act as bunds and prevent the soil from being washed away by running water. Number 3 क्या है? Strip cropping. Crops are grown in alternative strips of land to check the impact of the winds. Okay. And D, shelter belts. Farmers plant trees in several rows to check wind erosion. Right? अब इन चारों मेथड्स में से कौन सा यहाँ पर आपको बेस्ट सूटेड लग रहा है? इट इज टेरेस्ड फार्मिंग. ठीक है, so B is the correct option for this. Generally it is practiced on the slopes of mountains. Which among the following causes soil erosion is not an anthropogenic factor? Now what is anthropogenic? Related to man. Okay, related to human being, right? Yeah, human activities. अब overgrazing human activities है. ठीक है, when we leave all the animals or the cattle and all open in the forested area, they start overgrazing. That is anthropogenic factor. Number 2, sheet erosion. Number 3, deforestation. Deforestation again, people are causing deforestation a lot. Then improper farming techniques, again it is done, practiced by the people only. तो इनमें से कौन सा एक पॉइंट है जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं है? शीट इरोजन. ओके, शीट इरोजन इज द मोस्ट appropriate answer for this. Clear? Next is, this method to control soil erosion is termed as. इस पिक्चर में आप देखो, अब इसमें कौन सा मेथड आपको दिख रहा है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए किया गया है? इसमें आप बताओ. शेल्टर बेल्ट है, विंड ब्रेकर्स इसको बोलते हैं, या स्ट्रिप क्रॉपिंग है, या क्रॉप रोटेशन है, या एफोरेस्टेशन या रीएफोरेस्टेशन है? इसमें बेस्ट आंसर होगा, या द ओनली ऑप्शन विल बी ए, दैट इज शेल्टर बेल्ट्स या विंड ब्रेकर्स. आप ये समझ सकते हो, इस पिक्चर से बहुत क्लियर हो जाता है कि विंड के स्पीड को कम करने के लिए इस टाइप से प्लांट्स या ट्रीज को ग्रो किया जाता है, राइट? टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ विंड. Number 2, to make the wind actually leave all the soil particles which it is carrying to drop there only. तो ये सबसे ज्यादा वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर विंड इरोजन ज्यादा प्रोन, जो
मतलब areas जहाँ पर जो which are more prone to wind erosion या drier या arid regions में, ये सबसे important method होता है. ठीक है? So this is all with this session, children. So we have discussed many questions, a number of questions from soil chapter as well as climate, and a few from the topo sheets also. Right now, I want you all to just go through all these questions when you complete your preparation. Okay, this is a final revision thing. Okay, once you have covered all the chapters, then you just go through these MCQs and just go through it once, right? And I feel that most of the points we have covered under this from the soil chapter, right? Now, I am just leaving it here only, and I hope that you are going to take the best benefit of this video also, right? And if you can share this video or the link of this video with your friends and classmates, they also are going to get benefited by this. Okay, because this is something which is really going to help you out in the boards which are very close now. Okay, just a few days left for that. So please go through it and help the other friends also to get the link of it and the other practice papers also, right? Very soon we are going to meet again. I will bring some other practice papers for you so that you can have a quick revision of all the chapters in this way through the MCQs. Okay, so see you soon, children, in the next video. Till then, bye.